आज हम लोग ने एक्सेल में और थोड़े आगे बढ़ाना है, क्योंकि एक्सेल इफ इट इज क्लियर, learning Oracle or MS SQL or Postgres or MySQL डेटाबेस सीखने के लिए वो बहुत ईजी होगी। एक्सेल की एक्चुअल नाम, द कॉन्सेप्ट्स की नाम स्प्रेडशीट है। Excel is the brand name of Microsoft. Excel is not a concept. Excel is a product. Excel is Microsoft product. Excel जैसे Google Sheet है, as well as Open Office, WPS Office, बहुत सारे स्प्रेडशीट है, लेकिन Excel बहुत फास्ट और एफिशिएंट। हम लोग को Excel मालूम है तो ऑलमोस्ट 50 to 70% ऑफ द वर्क इजीली कर सकते हैं। एक मिनट में स्क्रीन शेयर करूं। ओके, नाउ आज एक एक्सरसाइज करने वाला है। अभी वर्ल्ड कप मैच चल रहा है ना, ये सब टीम्स क्या है, जस्ट गिव एग्जांपल्स। पहला वाला टीम्स, न्यूजीलैंड, टीम्स, टीम नेम, राइट? आर से कंट्री नेम, ऑर्डर, न्यूजीलैंड, इंडिया, इंडिया, पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, नेदरलैंड्स, साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश, बांग्लादेश, और अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान, श्रीलंका, श्रीलंका, राइट? ये सब टीम्स नेम है, ये सब टीम्स। टीम्स के नाम एक अलग शीट है एक्सेल के अंदर। ये तो इसके नाम हम लोग ने एक्सेल फाइल बोलते हैं, .xls में सेव हो जाएगी। एक एक्सेल फाइल के अंदर बहुत सारे शीट्स, ये शीट्स को भी नाम बदल सकता है। डबल क्लिक करेंगे तो इट विल हाईलाइट टीम्स। और नई शीट खोलना है, नई शीट खोलना है तो ये प्लस साइन को क्लिक कर लो। दूसरी शीट, ये शीट्स का नाम मैचेस। मैचेस, टू डिटरमिन द मैच क्या क्या चाहिए आपको। मैच में एक एग्जांपल दे दूं, मैच के लिए दो टीम्स होना चाहिए, राइट? टीम 1, टीम 2। और क्या क्या चाहिए मैच के लिए? मैच का एट्रीब्यूट्स, मैच का लक्षण और मैच का गुण क्या हो सकते हैं, क्या क्या? सर टीम 1 में भी अच्छा खेलती हो, उसके प्लेयर्स गुड हो। नहीं, सपोज है मैच, मैच के लिए क्या क्या डिटेल्स चाहिए आपको? टीम 1 और टीम 2 के बीच में ये मैच है, दैट इज वन डिटेल। व्हाट इज द अदर डिटेल अबाउट द मैच? और कुछ डिटेल्स है क्या मैच का? हाँ, सर 11 प्लेयर्स, मैच होने के बाद ही स्कोर होगी, मैच नहीं होगा अभी तक नहीं हुआ। देन व्हाट डू यू नीड? प्लेयर्स नंबर, उसके पहले प्लेस, प्लेस, इधर यस सर, प्लेस, प्लेस। हाँ राइट। फॉर एग्जांपल इंडिया वर्सेस श्रीलंका, प्लेस तो मुंबई। और क्या चाहिए, और क्या डिटेल्स चाहिए मैच के लिए? सर किस स्टेडियम में हो रहा है? हाँ, सिटी, राइट? स्टेडियम, स्टेडियम का नाम, स्टेडियम जैसे व्हाट इज वानखड़े, या वानखड़े स्टेडियम। और
और क्या चाहिए? व्हाट इज अदर डिटेल? टाइप भी कर सकते हैं आप लोग। हाँ, डेट एंड टाइम, करेक्ट। डेट एंड टाइम, which very good, excellent. Date, time, umpire 1, umpire 2, umpire 3, और डेट, बैट्स टाइम, बॉल, umpire 3, और क्या डिटेल्स चाहिए? बैट्स एंड बॉल, टॉस 1 by, मैच शुरू नहीं हो तो ये एम्प्टी होगा, मैच शुरू हुआ तो ये तो this will be having, for example, 18th October 2023, time 7 p.m, umpire 1, Body, umpire 2, Ramo, umpire 3, Balaji, toss 1 by India, right? और क्या क्या चीज हो सकता है मैच के लिए? अगर मैच शुरू हुआ, मैच खत्म हुआ, कल का मैच खत्म हुआ, नाउ व्हाट डिटेल्स? स्कोर, उसके पहले, हाँ हाँ, वेरी गुड। आकांक्षा ने बोल दिया लाइक T20 या मैच का टाइप क्या है, ये T20 मैच या 50 मैच, राइट? हाँ, टीम 1 मैन ऑफ द मैच, एग्जैक्टली ना। उसके पहले टॉस 1 बाई, फर्स्ट बैट बाई, राइट, फर्स्ट बैट बाई श्रीलंका, राइट, and then team 1 score, team 2 score 1 by, राइट? एक मैच के लिए बहुत सारे डिटेल्स है। टीम 1 स्कोर 198, टीम 2 स्कोर 199, 1 by, let us say, श्रीलंका, right? Then now this is one part, this is like one line. So अगर हमारे पास 100 मैच है, मैच टाइप, राइट, मैच टाइप T20 या so T50, right, this is 50 overs match. Now ये मैच इंडिया और श्रीलंका के बीच में, और एक मैच हो सकता है न्यूजीलैंड वर्सेस पाकिस्तान इन चेन्नई, बहुत सारे डिटेल्स फिल कर सकते हैं। और एक मैच इंग्लैंड वर्सेस नेदरलैंड्स इन अहमदाबाद, बहुत सारे डिटेल्स फिल कर सकते हैं। तो अगर 100 मैच हम लोग कंडक्ट कर रहे हैं तो 100 रोज होना चाहिए, यस सर? 100 मैच के लिए 100 रोज होना चाहिए। अगर ये मैच, यस सर, और स्टेटस, स्टेटस में कंप्लीटेड, कंप्लीटेड। अगर ये मैच तो कैंसिल हुआ तो रेन के वजह से, राइट, कैंसल्ड, वो भी हो सकता है ना, स्टेटस मैच ही नहीं प्ले किया हम लोग ने। अगर मैच ने शेड्यूल हुआ था 19 तारीख को, लेकिन बिकॉज ऑफ बारिश हम लोग ने मैच को कैंसिल कर दिया, तो ये सब डिटेल्स नहीं रहेगी, सिर्फ एम्प्टी, राइट? Good. Is this concept clear? And somebody else also said, who is the man of the match, right? And is it daylight match or day match, right? That is also very good. Daylight. So ये मैच के लिए बहुत सारे डिटेल्स होता है। ये हॉरिजॉन्टल की नाम रो या रिकॉर्ड, ये वर्टिकल की नाम कॉलम। सो एक मैच के लिए ये सब कॉलम को फिल करना पड़ेगा। अगर डिटेल्स नहीं है तो लीव इट एम्प्टी।
क्लियर? और अगर फर्स्ट टीम ने प्ले किया, सेकंड इनिंग्स में बारिश, इसीलिए हम लोग ने बंद किया, सो दैट इज आल्सो पॉसिबल. सेकंड टीम डिडंट इवन प्ले, हो सकता है. ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो प्लीज रेज योर हैंड्स. ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो प्लीज रेज. गुड. दिस इज द फर्स्ट थिंग. नाउ दिस इज कॉल्ड, this whole thing is called table. Remember, in Excel में हर शीट, हर वर्कशीट के नाम शीट और टेबल, क्योंकि एक टेबल में रोज और कॉलम्स होता है. रिमेंबर दिस वर्ड टेबल. टेबल में रोज भी होता है, कॉलम्स भी होता है. नाउ और एक चीज दिखाता हूं हम लोग को, स्क्रीन बंद करके. एक मिनट, 1 second. I will stop my screen share and show something to you. Okay. This, it will be interesting. Okay. Now there is no background. Now watch. What do you see? Are you seeing something? Your background is changed. हाँ, इसमें क्या है? Yes, sir. ये सब क्या है? It's मूर्तियां हैं. मूर्तियां हैं. This is नवरात्रि हो रहे हैं ना अभी. Yes, नवरात्रि sir. में एक ट्रेडिशन है, हमारा ट्रेडिशन में हर घर में लाइक आइडल्स, छोटा छोटा स्टैचूज, आइडल्स और टॉयज, हम लोग ने एक स्टारकेस बनाकर उसमें रखते हैं 10 दिन. ये स्टारकेस में आपने देखा, ये स्टारकेस में क्या होता है? ये हर स्टेप रो होता है ना? यस सर नो? Yes, sir. If you see now, each step is a row. टॉप स्टेप में कितने आइडल्स है? 4 या 5. दूसरी रो फ्रॉम द टॉप, तीसरी रो फ्रॉम द टॉप. सो इन लाइफ almost everything can be converted to rows and columns. हमारा शेल्फ में बुक्स है. शेल्फ में बुक्स को हम लोग ना कैसे अरेंज करते हैं? रो 1, रो 2, रो 3. रो 1 में बहुत सारे बुक्स, रो 1 में साइंस बुक्स, रो 2 में मैथ्स बुक्स, रो 3 में कॉमिक्स बुक्स. फार्मेसी में क्या होता है? दवाई को हाउ they arrange that in the pharmacy, right? How is it arranged in the pharmacy? It is all rows and columns. Then have you seen army parade? Yes, sir. On Yes, TV. Right? एक minute, I will show my screen. Now if you see, this is army parade. This is all, look at this image. Rows and columns, right? Row 1, row 2, row 3, row 4, first column, second column, तीसरी, fourth. Correct? Sir, it's looking only a white sheet paper. White screen. Let me see why. Wait a minute. Sir, also video is pausing and voice Now. is breaking. Now, how is it? Are you looking at is the screen visible? Yes, sir. Yes, sir. Right? So, each one is a row. Army parade is a row, correct? Yes, sir. Now,
paddy field saplings. एक मिनट, इधर देख लो, ये सब क्या है? सर ये सब धान लगाया गया है हाँ, धान लगा ना, ये सब इसमें भी रो है ना, यस सर रो 1, रो Yes. 2, रो 3. So whether it is army, whether it is library हो भी है, लेकिन क्या फार्मेसी होते हैं, या कॉलेज classroom, रो 1, रो 2, रो 3, everything can be converted to rows and columns. That is why Excel is a big success. क्यों इतनी पॉपुलर हुआ Excel? Because in our life सब कुछ you can translate to rows and columns. Because हम लोग अरेंज करते हैं, घर में भी अरेंज करते हैं, किचन में भी अरेंज करते हैं, टॉयज को भी अरेंज करते हैं, सब कुछ we try to arrange in rows and columns. Combination of rows and columns, 3 rows और से 10 और 15 columns, ये combination के इसके नाम table. This is the first principle. Now this is table 1, teams, just एक ही है. 2, matches. Now हर मैच के लिए हम लोग नंबर देना पड़ेगा. क्यों? रेफरेंस इजी हो जाती है ना. In Excel you can say put and then insert columns. Okay, you can put a column there, you can insert a column. Now say serial number 1, 2, 3, first match, second match, third match, pretty much we are getting every roll number we are getting for every person. हर मैच के लिए भी उन लोग नंबर देते हैं. Internally ICC will maintain a number. Now match 3, the moment I say match 3, I know it is between English and Netherlands. Match 3 में कौन play किया? Who played? We need to have player list also. Yes or no? Yes, sir. Now तीसरी sheet, players. This class is very important because if you understand this concept, अगर आपको ये ठीक से समझ हुआ तो database और tables, then you can master. All it needs is 1 या 2 हफ्ते में आप लोग ने मास्टर कर सकते हैं. तो ध्यान से लिसन कर लो, क्योंकि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. सिंपल कॉन्सेप्ट बट एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. Players, now I will say match number. Players के लिए match players, I would say match players. Okay, because हर मैच का प्लेयर्स अलग अलग होते हैं. इंजरी होते हैं, लेकिन बिकॉज ऑफ दैट बीमार होते हैं, इसीलिए प्ले नहीं करेंगे. नाउ मैच नंबर 3 में कौन खेला? टीम नेम इंडिया, प्लेयर नेम, और क्या चीज हो सकता है ये प्लेयर के लिए? हाउ क्या, व्हाट इज दैट प्रॉपर्टी या लक्षण, डिटेल्स चाहिए आपको. एनी अदर डिटेल्स आपको चाहिए? वो बॉलर है कि बैट्समैन है? हाँ, प्लेयर्स नेम, बॉलर या बैट्समैन या विकेट कीपर, राइट. प्लेयर नेम, प्लेयर टाइप, करेक्ट. और कैप्टन और नॉट. प्लेयर नेम रोहित, प्लेयर टाइप बैट्समैन, कैप्टन यस. लेकिन लाइक से टाइप और एक थे पोजीशन, लेट अस से पोजीशन.
लेट अस से कैप्टन, सेम मैच पे विराट को बैट्समैन है, प्लेयर, ही इज नॉट अ कैप्टन. देन बुमराह, bowler, player है, he is not a captain, right? Some other player, ex wicket keeper, player, and some other player like why batsman substitute, क्योंकि substitute भी होना चाहिए ना, अगर किसी को इंजरी हुआ के बिना ये तो we will substitute with this guy. So ये same match पे you can copy paste in Excel. For match number 3 in India, Virat is a batsman player, right? And then one more एक और एक चीज होती है, वो क्या पता है, जो किसको नंबर ऑफ प्लेयर ऑलराउंडर, हाँ ऑलराउंडर भी हो सकता है, ऑलराउंडर भी होता है, और फील्डर या ऑलराउंडर. और एक चीज होती है, बैटिंग पोजीशन, बैटिंग पोजीशन 1 and 2, 9th down, 8th down, right? Who will bat first? Opener मतलब 1 and 1, right? 1 and 2, open मतलब 1 down, then that position is 3. पहले ये वाला आना है, दूसरी second down this guy should come, third this guy should come. They can change the order, लेकिन they will have a strategy. हम लोग ने ये सीक्वेंस में प्ले करने वाले करके हम उन लोग ने पहले डिसाइड करना चाहिए. दिस इज बैटिंग पोजीशन भी होगा, राइट? एंड और एक चीज होगी, वो क्या पता है, जर्सी नंबर, वो टी शर्ट पहनता है ना, वो टी शर्ट के फ्रंट और बैक और साइड पे वो एक नंबर प्रिंट हुआ. मोस्टली नंबर में नॉट चेंज, 15 और से 8, 22 समथिंग लाइक दैट. क्यों? बिकॉज कमेंट्री के लिए ये नंबर जरूरत है. कमेंट्री करने वाले ने दूर से देखते हैं कौन दौड़ रहा है, तो कौन बॉल कर रहा है, फेस को नहीं दे सकता. अगर हम लोग फेस नहीं देखेंगे तो वो कौन है पता नहीं. कमेंट्री करना है ना. 42nd ओवर, थर्ड बॉल, शिवरामकृष्णन फ्रॉम पेविलियन एंड. कमेंटेटर के लिए how will that know, how will he know that face? They will just see the jersey number देख के उन लोग ने कमेंट्री करते हैं, बिकॉज दे कैन नॉट ऑल्सो सी क्लोज अप. हमारे सामने एक टीवी है, लेकिन टीवी में जो कैमरामैन फोकस करता है वही एंगल आएगा, लेकिन फॉर द कमेंटेटर ही हैज टू सी एवरी प्लेस, राइट? सो नाउ इन दिस 3 आइटम्स में व्हाट वी लर्नड, आई एम नॉट गोइंग टू गिव अ क्लू. आपने क्या सीखा? एनी आइडिया है आपके पास? एनी आइडिया है? ये तीनों शीट्स में, तीनों टेबल्स में मैं क्या किया? व्हाट डिड आई डू एंड व्हाट कॉन्सेप्ट आपने सीखा? डेटा को एनालाइज करना, मतलब हाँ, एक तो अरेंजिंग डेटा इन एक्सेल, ये तो कॉमन चीज है, राइट? सबको पता है, या हर मैच के लिए एक डेट होता है, स्टेडियम होते हैं करके, ये सब मालूम है. लेकिन वो डेटा को अरेंज करना है, दैट इज द फर्स्ट थिंग, इमीडिएट. वेरी गुड. आई थिंक साक्षी शर्मा ने बोली,
एक्सलेंट। अरेंज करना है, जैसे हमारे घर पे वो नवरात्रि के लिए हम लोग ने वो आइडल्स को अरेंज किया, बुक शेल्फ अरेंज करते हैं, डेटा अरेंज किया, वो सही बात है। दूसरी बात, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड? सब डेटा को एक ही बास्केट में, एक ही शीट में नहीं डाल सकते हैं। अगर हम लोग सब डेटा को एक ही शीट में डाला तो ये तो स्कैटर हो जाएगी, समझ में नहीं आएगा ये क्या है करके। इमेजिन एक ही शीट में ये पूरा टेबल, ये पूरा वाला सबको एक ही शीट में डाल दिया, अंडरस्टैंड कर सकता है क्या? नहीं। सो डेटा को अरेंज करते समय वी हैव टू सेग्रीगेट, अलग अलग बकेट में, अलग अलग टेबल में डेटा को अरेंज करना है। डेटा को अरेंज करना है, वो सही बात है, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, अलग अलग टेबल में अरेंज करना है, दिस इज सेकंड थिंग। इज दिस क्लियर? यस सर। ग्रुपिंग ऑफ डेटा, ग्रुपिंग ऑफ डेटा, किसके लिए ग्रुप करना पड़ेगा? रिट्रीवल ऑफ डेटा बिकम इजी। रिट्रीवल मतलब एक बार डाल दिया, 2 दिन के बाद वो सेम एक्सेल शीट को खोलने के बाद, नाउ इफ यू सी देन यू कैन अंडरस्टैंड इजीली, इजीली समझ सकते हैं, राइट? गुड गुड। सिंप्लीफाई डेटा फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। गुड। एक्सेल तो बहुत सिंपल है, क्योंकि एक्सेल हमारा लाइफ में क्या चीज रोज एंड डेटा कॉलम्स में अरेंज करते हैं, सेम कॉन्सेप्ट सॉफ्टवेयर में भी इंप्लीमेंट किया, इसीलिए बहुत इजी हो चुकी है एक्सेल। गुड। नाउ वन मोर डेटा, आई एम गोइंग टू कीप क्वाइट, आप लोग ने बोलने वाले। नाउ ball by ball detail, match number 3, match number 3, sorry, match number 1, India versus Sri Lanka, match number 1 पे बॉल बाय बॉल डिटेल्स चाहिए मुझे। इसके लिए क्या क्या डेटा चाहिए आपको, बोल दो, आई विल वेट, यू जस्ट टेल मी। ओवर नंबर, ओके गुड। मैच नंबर सेम रहेगी, हर एक मैच को से डिफरेंट, लेकिन वन मैच में वन नंबर। ओवर नंबर, बॉल बॉलर नंबर, हाँ बॉलर नेम, राइट? हम लोग साथ साथ एक एक काउंट कर देते हैं, 1 मिनट। मैच नंबर 1, ओवर नंबर 1, बॉल नंबर 1, लेट अस से मनप्रीत। देन क्या चाहिए इधर? सर रन्स हो सकते हैं, कितने बॉल पे कितने रन? रन्स, रन्स तो इसमें 4 रन। देन कितने बॉल्स उन्होंने वाइट फेंके? हाँ, ये तो पहली ओवर है, पहली बॉल है, ये बॉल में 4 रन मिला। और क्या चाहिए ये बॉल के बारे में? उस ओवर में कितने बॉल्स वाइट थे? एक मिनट तो ये ओवर में, ये अभी एक ही बॉल को देखो, ये सिर्फ एक बॉल को देखो, पूरी ओवर मत देखो, एक ही, ये सिर्फ पहली ओवर, पहली बॉल, 4 रन। बैट्समैन कौन है? लेट अस से विलियम्स, ओके, जस्ट पुटिंग सम नेम। देन उस बॉल की स्पीड कितनी थी? हाँ एग्जैक्टली, वेरी गुड। पास की स्पीड 78.2 माइल्स पर आवर। देन एंगल क्या था? एंगल, राइट, ओके। और
नहीं, डिस्टेंस से फेंकी गई। distance, pitch, right? Like because the pitch length is 22 feet, 22 yards, 17.2 yard में हुआ था 10. Very good. आगे बढ़ो. Bowler name, batsman name, line and length of the ball, right? ना रन रेट तो ये बॉल में नहीं आएगा, एक बॉल के लिए हाउ कैन यू टेल. लेंथ ऑफ द बॉल ने बोल दिया, करेक्ट. पिचिंग लेंथ, स्पीड बोल दिया, बॉल टाइप, हाँ वेरी गुड, बॉल टाइप, राइट. बॉल टाइप फुल टॉस हो सकता है, ओवर पिच हो सकता है, शॉर्ट बॉल हो सकता है, जैसे फुल टॉस. और क्या है, और क्या हो सकता है? और क्या बात हो सकता है, क्या डिटेल्स हो सकता है एक बॉल को? नाउ यू सोच लो, आई एम जस्ट मेकिंग यू थिंक. मैच नंबर 1, ओवर नंबर 1, बॉल नंबर 2, मनप्रीत बॉल कर रहा है, रन्स ने 0, विलियम्स ने फेस कर रहा है, बॉल का 81 माइल्स पर आवर, एंगल तो लेफ्ट साइड. And one more thing, pitch with middle stick से कौन सा साइड में वो, how many feet away from it, right? अगर एकदम मिडिल स्टिक को बॉल किया तो 0 होगा, लेकिन if it is लेग साइड में 2 feet, राइट साइड में 2 feet, they will also mention that. ऑफ साइड में पिच किया, लेग साइड में पिच किया, पिचिंग लेंथ 16 feet, 16 yards, let us say Yorker. So imagine एक मैच में 15-6 and 15-6 दो इनिंग्स होते हैं, दो इनिंग्स में 15-6 300 प्लस 300 बॉल्स है, तो कितने कितने रोज होना चाहिए? मिनिमम 300 रो, 600 रोज होना चाहिए, राइट. नाउ इसमें और एक चीज हम लोग ने भूल गए, व्हाट इज दैट? इनिंग्स. पहले इनिंग्स या दूसरी इनिंग्स, राइट? दैट इज आल्सो नीडेड ना. ओवर नंबर 1, लेकिन पहले इनिंग्स में ओवर नंबर 1 या दूसरी इनिंग्स में, सेकंड इनिंग्स में दूसरे ओवर नंबर 1, वो भी होता है. किसी मैच में 43 ओवर्स भी हो सकता है, क्योंकि बिकॉज ऑफ लाइट फेलियर या बारिश दे वुड हैव रिड्यूस्ड द ओवर्स, वो भी हो सकता है, राइट. नाउ अगर 2 फुल इनिंग्स 50-50 ओवर्स प्ले किया तो इसमें कितने रिकॉर्ड्स मिनिमम होना चाहिए? 300 प्लस 300, यस सर नो? यस सर. यस सर. उससे 600 से ज्यादा हो सकता है क्या? सिक्स 600 से ज्यादा हो सकता है क्या? मे बी सर, बट ऑलमोस्ट मे नॉट. क्यों? अगर मैच नंबर 1, इनिंग्स नंबर 1, ओवर नंबर 1, थर्ड बॉल, मनप्रीत ने बोल रहा है रन तो 1, राइट, बैट्समैन तो विलियम्स है, स्पीड तो 89, एंगल वाइड हो चुका है, ओके, बॉल टाइप वाइड, लेग साइड में वाइड बोल दिया, पिचिंग लेंथ 19 वाइड हो चुका है, 1 रन मिल गया. अभी क्या करना पड़ेगा? एक एक्स्ट्रा बॉल डालनी पड़ेगी. हाँ, ये एक्स्ट्रा बॉल डालने के लिए और एक हो जाए, बॉल रो हो जाएगी इधर,
राइट? Yes, sir. Yes, सो sir. इसीलिए अगर कितने वाइड बोल दिया और कितने नो बॉल्स भी है, if there are 3 no balls and 4 wides, 3 plus 4, 7 rows extra होना चाहिए, करेक्ट ना? Yes, So sir. हमारा स्क्रीन पे 7 डॉट्स, हर एक डॉट में वाइड या नो बॉल दिखाता है ना. So now you can understand each ball के लिए. And one more, I'm looking for one more. There is a fine parameter. एकदम जबरदस्त प्रॉपर्टी है, एकदम जबरदस्त लक्षण है हर एक बॉल को. Anybody, any cricket player, can you think? I'm just seeing here. Movement of the ball in degrees. Very good. Excellent. Excellent. Who is that? Conver Kush. Movement of the ball. Yes. So in swinger or out swinger. That's a very good thing. Then what is what? That is one more thing. There is one more thing. For every ball they will measure. It is nothing to do with the ball. बॉल के बारे में नहीं, एनवायरनमेंट के बारे में सोच लो. बॉल के बारे में नहीं, एनवायरनमेंट के बारे में एक चीज तो रिकॉर्ड करते हैं. एनीबडी, कैन यू थिंक ऑफ इट? वो बॉल कितनी दूर गई वो तो ठीक है, वो उसको एक सिक्सर मारा, सिक्सर तो 99 मीटर्स गई थी, राइट? दैट इज वन थिंग. आई एम लुकिंग एट वन फाइनर, और एक फाइनर थिंग है. हाँ, एक्सलेंट. रिचा और कुमार मंगलम, तालिया. Excellent parameter. Air wind speed. क्योंकि हम लोग ने एक ग्राउंड में प्ले करते हैं, वो ग्राउंड में हवा जोर से आ रही क्या या हवा नहीं है. और टेम्परेचर, बिकॉज विंड स्पीड और टेम्परेचर दोनों क्यों चाहिए? ये दोनों, अगर बहुत ठंड है एंड विंड है, ये किसके लिए एडवांटेज है? फास्ट बॉलर के लिए एडवांटेज है या स्पिन बॉलर के लिए एडवांटेज? हाँ, फास्ट बॉलर के लिए. क्यों? विंड इज गुड फॉर द फास्ट बॉलर क्योंकि वो स्विंग कर सकते हैं, एंड टेम्परेचर बहुत कम है तो वो भी स्विंग के लिए इट विल हेल्प. एंड अनदर पर्सन मेंशन्ड ड्यू, प्रेम शंकर, थैंक यू फॉर दैट. ड्यू आल्सो दे विल मेजर हर बॉल को, क्योंकि डे नाइट मैच में फर्स्ट इनिंग्स एडवांटेज है, दूसरी इनिंग्स पे बहुत, लाइक से धर्मशाला में मैच हो रही है, dew will settle down, then outfield will not be fast, and वो बॉल एकदम वेट हो जाती है, एंड इट विल नॉट, एंड कैचिंग भी बहुत डिफिकल्ट है. सो इसीलिए ये सब, क्योंकि मैच तो 3 घंटे चलते रहते हैं, वो मैच में फर्स्ट 10 मिनट्स में भी ग्रेट, वेदर चेंज हो गए के बाद एवरी सिचुएशन विल चेंज. सो cricket data analysis itself is a very big thing. Can you think of something like this, some other analysis? अभी आज हम लोग ने क्या किया? डेटा को अरेंज किया. अरेंज करने और अरेंजमेंट में भी अलग अलग बकेट्स, अलग अलग बैग्स, अलग अलग शीट में हम लोग ने डाल दिया, एंड हम लोग ने एक ही बॉल लेने के बाद एक ही बॉल का क्या क्या लक्षण है, क्या क्या डिटेल्स चाहिए करके हम लोग ने पूरी डेटा डॉक्यूमेंट किया. इज दिस क्लियर? लाइक दिस इज क्रिकेट एनालिसिस. अभी हम लोग
1000 क्रिकेट मैचेस के डेटा एनालाइज करेंगे तो इजीली वो ट्रेंड पता चलेगा. Now, like this, I am just stopping my screen. Like this, any other analysis can you think? एकदम famous analysis. Weather data, excellent. Weather data analysis is so extremely good. One more interesting data. Item sold in a shopping mall, very good. Some other, you tell me. Item sold in a shopping mall analysis. आपके अगर आप एक दुकान खुला है तो एनालाइज हर दिन करना ही पड़ेगा ना. प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट या नष्ट हुआ. अनलेस हम लोग एनालाइज करेंगे कैसा पता चलेगा. एजुकेशन डेटा, अटेंडेंस डेटा, स्टॉक मार्केट डेटा और पॉपुलेशन डेटा और आगे बढ़ो. और क्या क्या एनालाइज कर सकते हैं हम लोग. मैन्युफैक्चरिंग डेटा, एग्जैक्टली हाउ मेनी कार्स को मैन्युफैक्चर किया, हाउ मेनी कार्स में सोल्ड, हाउ मेनी रियल एस्टेट डेटा, एडवर्टाइजमेंट डेटा, वाटर यूटिलिटी, एक्सलेंट. वाटर, यस, एक्सलेंट. क्रॉप प्रोडक्शन डेटा, वायरल फीवर डेटा, एकदम जबरदस्त. डेवलपमेंट डेटा, जीडीपी डेटा, एयर क्वालिटी डेटा. सो आपके सामने ये बहुत बहुत बड़ी फील्ड है डेटा एनालिटिक्स. ये पूरी अपॉर्चुनिटी हमारे सामने है. ये अपॉर्चुनिटी को फायदा उड़ाना हमारे पास है. अगर हम लोग ने वी इग्नोर द अपॉर्चुनिटी, हम लोग वी आर वेस्टिंग. इसीलिए डेटा हैज अ ग्रेट वैल्यू. वो डेटा एनालाइज करेंगे तो एनालाइज करने के लिए बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज है. एंड मैं एक नाम बोलूं, आपको क्या याद आ रहा है? प्रशांत किशोर. प्रशांत किशोर, what comes to your mind? You can type it or volunteers can tell also. प्रशांत किशोर, क्या याद आ रहा है? कुछ नहीं. अरे यार, प्रशांत किशोर किसी ने बोल रहा ही इज अ मेल, वो तो पता है. हाँ, पॉलिटिकल एनालिस्ट, पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट, पॉलिटिकल डेटा एनालिस्ट. ही इज नॉट अ पॉलिटिशियन. वो पॉलिटिशियन तो नहीं है, ट्राई मारा, लेकिन ही इज अ गुड एनालिस्ट. ये इलेक्शन पे क्या स्ट्रैटेजी करना है, वो स्ट्रैटेजी के लिए क्या चाहिए, डेटा चाहिए. राइट. हर कंस्टिट्यूंसी, हर गांव में क्या क्या डेटा चाहिए उनको, अगर हम लोग देंगे तो ही विल गिव ये दिस पर्सन विल विन फ्रॉम दिस पार्टी पॉसिबिलिटी. वो मार्जिन भी दे सकता है, क्योंकि डेटा, पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी, एवरीथिंग गोज बाय स्ट्रैटेजी. राइट. सो हमारे सामने बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज इन डेटा एनालिटिक्स में. नाउ डिड यू अंडरस्टैंड the data grouping, data arrangement? Yes or no? Yes है तो please raise your hands. I think people are not, only 7 or 8 hands are. Oh, good. Yes, sir. Good. Now I want you to do the exercise, one exercise. I will be closing in another 2-3 minutes. I want you to do one exercise. Tomorrow we will review that. Again. हम लोग ने
cricket data analyze किया and we have typed the data, gave examples, right? Now agar if you are running an education, since you are all college students, कॉलेज में यूपी कॉलेज या डीडब्ल्यू कॉलेज में क्या क्या डेटा है, क्या क्या डेटा को ग्रुप कर सकते हैं. आई विल गिव यू वन एग्जांपल. लिस्ट ऑफ टीचर्स. टीचर के लिए और से प्रोफेसर नाम चाहिए, डिपार्टमेंट चाहिए, उनका क्वालिफिकेशन चाहिए, वो लेक्चरर या असिस्टेंट प्रोफेसर या प्रोफेसर या प्रिंसिपल या वाइस प्रिंसिपल, बहुत सारे डिटेल्स है ना हर फैकल्टी के लिए, राइट? लिस्ट ऑफ डिपार्टमेंट्स, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स, लिस्ट ऑफ फैकल्टी, लिस्ट ऑफ लैब्स. ये तो फिजिक्स लैब है, फिजिक्स लैब 1, फिजिक्स लैब 2, वो फिजिक्स लैब के लिए एक नंबर भी होगा, PH102, PH103, CH105 केमिस्ट्री में, राइट? सो कॉलेज मैनेज करने के लिए बहुत सारा डेटा होना चाहिए. वो सब डेटा क्या क्या है आपने इधर नोटपैड या एक्सेल शीट में डॉक्यूमेंट करके टाइप कर लो. एक एक एग्जाम्पल दे दो. मैं तो अभी क्रिकेट के लिए टीम्स के लिए एग्जाम्पल दिया, लिस्ट ऑफ प्लेयर्स के लिए एग्जाम्पल दिया, मैचेस के लिए एग्जाम्पल दिया, बॉल बाय बॉल डिटेल्स को एग्जाम्पल दिया. ऐसे सेम वे you also create. It will take 2-3 hours. You have to work. आज से ये सब part of your practicals, like software practicals now. Now you do. आप कर लो. Only by doing, right? In teaching में first impression teacher से आती है. Teachers तो अध्यापक ने इंस्पायर करना पड़ेगा स्टूडेंट्स को. अगर अध्यापक ने इंस्पायर नहीं कर रहा है, टीचर एकदम सोबर रहता है, टीचर एकदम एनर्जी नहीं है उनके पास, देन हम लोग ने वी विल नॉट पे अटेंशन. सो पहली काम टीचर इंस्पायर करना पड़ेगा. टीचर इंस्पायर करने के बाद वो सब डिटेल्स प्रॉपर्ली नोट कर कर स्टूडेंट्स भी प्रयत्न करना पड़ेगा, छात्रों प्रयत्न करना पड़ेगा. प्रैक्टिस, स्टडी, व्हाटएवर. देन तीसरी काम, राइट? थर्ड आइटम, फ्रेंड्स से मिलकर हम लोग ने डिस्कस करना पड़ेगा. तो बहुत सारे आइटम्स अध्यापक से नहीं सीखते हैं, फ्रेंड से सीखते हैं. अगर फ्रेंड एक बोला तो हम लोग वी पे अटेंशन, क्योंकि हमारा ट्रस्ट विद द फ्रेंड, सखा या सखी, फ्रेंड्स से सीखते हैं. ये तीनों में लिसनिंग, सीइंग, रीडिंग, डिस्कसिंग होता है, लेकिन करते नहीं, प्रैक्टिस नहीं करते हैं. सो फोर्थ आइटम हम खुद करना पड़ेगा. अभी हम लोग इसके नाम क्रिया. सो इसीलिए एवरी रिलीजन में भी, अगर हिंदू या मुस्लिम या क्रिश्चियन या बुद्धिस्ट या जैनिज्म, सब कुछ में मंत्र भी होता है, चैंटिंग करना पड़ेगा और पूजा भी करना पड़ेगा या नमाज करना पड़ेगा, राइट? या पूजा या नमाज या प्रेयर, ये सब में कार्य होता है, क्रिया होता है. अनलेस यू डू with your body, with your physical body, you put your physical body and mind together and do kriya ki bina, we will not learn it, we will not do it fully. So aaj we listened together with your help only. I typed everything. I didn't type anything except 1 or 2 things. I just did it on my own. Rest everything आप लोग ने बोला. Now ये एक्सरसाइज कॉलेज के लिए क्या क्या चाहिए,
एक एक्सेल शीट या नोटपैड में टाइप कर लो. Each one should type और दो मिलकर टाइप कर लो. That is your exercise. And tomorrow we will deal with that exercise. And this is even this exercise takes 1 full week. हर दिन यही करते रहते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं. इस एक्सरसाइज में आपको एक जबरदस्त ग्रिप होना चाहिए. फंडामेंटल डेटा, इसके नाम फंडामेंटल डेटा अंडरस्टैंडिंग और डेटा डॉक्यूमेंटेशन. ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो हम लोग ने आगे मूव नहीं कर सके. इज दिस क्लियर? एंड कॉलेज को हम लोग ने बोल दिया, कॉलेज कोऑर्डिनेटर्स को बोल दिया लैब ओपन करने के लिए. दे विल टेक सम एक्शन डेफिनेटली.